Namaste. Welcome to this episode of Kavya Yoga. In recent few days, several people have asked me to explain briefly what does Kavya Yoga mean? What is the yoga of poetry? So I thought it would be my duty to explain briefly what Kavya Yoga or Yoga of Kavya means. Yoga means essentially union. Whatever you see or experience separately, individually, far apart, are actually at some level they are connected, not only connected, but they are different expressions of the same reality. So I will explain this in English as I'm doing now, and also I will repeat that approximately in Hindi. So the way the screen describes it, that Kavya Yoga is the summation or integration of consciousness, which is the foundation of all physical material expression, traveling or expressing through the mind, and mind has no way to express it independently, directly. Therefore, that expression takes place through words. So that is consciousness transcending through mind to words to seek expression. On the other side, or another aspect of it, is that our experiences, understanding, observation of the whole world around us and moving toward society and our experiences, observations in society and how that shapes us. So that movement from physical existence, the whole world, towards society that is partly expressed in society as a group, and then moving forward toward individuals as individual experiences. So this movement from the world to society to individual also seeks expression, and it has no way to express other than through words, combined with, of course, your gestures, your eyes, your mind, your body language, etc. So these are all dimensions coming together in the form of poetry. And poetry is perhaps the most capable form of expressing many dimensions of experiences and sentiments and the content of mind and society together. As a consequence, every time you read a poem which is in a true sense called a poem, then you derive different meanings from the same poem. That is not because the poem has changed, is because in the interim period, second time you come to read the poem, you have changed, because you have had new experiences, new observations in the world and society, as well as in your subconscious mind and the vibration of the consciousness emerging in material form of expression. So the summation of all this I have tried to express in one phrase, Kavya Yoga, or yoga of poetry. So now I will explain the same concept in Hindi. हिंदी भाषियों को नमस्कार, धनंजय कुमार की ओर से। तो मैं कुछ शब्दों में इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि काव्य योग क्या है, काव्य का योग क्या है। तो जैसा कि
कहा गया है हमारे इस एपिसोड के फ्रंट स्क्रीन पेज पे कि चेतना, चेतना, मन, शब्द। चेतना जो सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है, उसके स्पंदन से जो भौतिक संसार की अभिव्यक्ति होती है वो हमारे मन में कुछ अंश तक उतरती है। और दूसरी तरफ देखें तो जो पूरा विश्व है, भौतिक जगत है, जिसमें एक हमारा संसार बसा हुआ है, तो भौतिक जगत की अभिव्यक्ति एक कार्यान्वित होती है समाज की ओर, समाज को निर्धारित करती है, उसका निर्माण करती है और समाज के साथ एक उसका व्यावहारिक संबंध जुड़ता है। और वो सारी अभिव्यक्ति हमारी दिशा में, हमारे शब्दों की दिशा में आती है, क्योंकि शब्दों के अलावा और किसी तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। उसके साथ साथ हमारी मुद्राएं, हमारी दृष्टि, हमारे शरीर का जो आकार, जो रूप जो लेता है, तो उस सब माध्यम से ये आयाम हमारे सामने शब्दों के माध्यम से प्रकाशमान होता है। संसार, समाज शब्दों की ओर आता है और चेतना और मन शब्दों की ओर उतरता है। ये दोनों का सम्मिलन का एक नाम हमने दिया है काव्य योग, और योग की अभिव्यक्ति इन सब को सम्मिलित करती है, जुड़ती नहीं है। जुड़ने के अलावा वो एकांतरित होती है, एक रूप लेती है शब्दों के माध्यम से, जिसे हम कविता, काव्य योग कहते हैं। नमस्ते।